أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال إمام سجاد عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيمان أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. हमारा मौज़ूए गुफ्तगू इमाम अलैहिस्सलाम की नज़र में अखलाक क्या है, बेहतरीन अखलाक क्या है। और चूँकि हम सब अलैहिस्सलाम के शिया हैं, फॉलोअर्स हैं, मुहिब्बीन हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि जो तालीमात अखलाक के हवाले से, किरदार के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, उठने बैठने के हवाले से, अल्लाह से ताल्लुक़ के हवाले से, लोगों के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो तालीमात आइमा अलैहिस्सलाम की, हमें भी चाहिए कि हम उनको अपने ऊपर अप्लाई करें। तो पहली बात जो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाई वह बल्लिग़ बईमान अकमल ईमान, अल्लाह मुझे वो ईमान इबलाग कर, वो ईमान अता कर कि जो तेरे नज़दीक परफेक्ट ईमान हो, कामिल तरीन ईमान हो, बेहतरीन ईमान हो। यानी वो ईमान जो ईमान का इंतहाई दर्जा है, जो आला तरीन दर्जा है, और वो ईमान के जिसको अल्लाह कबूल करता है। तो ज़ात परवरदिगार जिस ईमान को कबूल करती है वो ईमान हमें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सलवात। आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ईमान के 4 पिलर्स हैं। पहला उसमें से सब्र है, दूसरा यकीन है, तीसरा आदल है और चौथा जिहाद है। आज ईमान के हवाले से हजरत अली अलैहिस्सलाम के चंद फरामीन आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि मौला की निगाह में कि वो ईमान के जिनके बारे में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरद अल ईमान कुल्लही इलल कुफ्र कुल्लह, के कुल का कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम कुल ईमान है। तो कुल ईमान या अमीरुल मोमिनीन की निगाह में, खुद उनकी निगाह में, उनके अल्फाज में ईमान क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल अमानतु ईमानुन, ईमान तुम्हें अमानत के तौर पे दिया गया है। और ईमान एक ऐसी चीज है कि मसलन हम बाई बर्थ भी मुसलमान होते हैं। जब हमारे वालिदैन मुसलमान हों तो बाई बर्थ उनके बच्चे मुसलमान होते हैं, और हमें कभी उस तरह डिक्लेयर करने की पूरी जिंदगी में जरूरत नहीं होती, इसलिए कि 2 चिल्ड्रन हु आर बोर्न इन द हाउस ऑफ मुस्लिम पेरेंट्स दे आर ऑटोमेटिकली मुस्लिम्स। So Islam, until and unless someone is not declaring that he is non-Muslim, he will be accepted as Muslim. So Islam is something that is not going anywhere. But Iman will never stay constantly in the body or in the soul or in the heart of a believer. Whenever a person is committing sin, at that moment, maybe he will not be mu'min at all, or maybe he is weakening his Iman. जब भी कोई मोमिन या मोमना गुनाह करता है या करती है तो उस वक्त या तो जो उसका ईमान था उसमें से बहुत सा हिस्सा उस गुनाह की वजह से चला जाता है या कमजोर हो जाता है या खत्म हो जाता है या बिल्कुल ईमान इंसान बेईमान हो जाता है। तो इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल अमानत ईमानुन, कि ये जो ईमान है ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें जब मिलता है तो ये अमानत है, और इस अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, इसको कमजोर भी नहीं करना चाहिए और इसको अपने आप से दूर भी नहीं करना चाहिए। दूसरे फरमान मौला फरमाते हैं अल ईमान अमानुन, एनीवन हु गॉट ईमान इट मीन ही इज सेफ,
he has got safety. That is Aman. Aman means protection has been granted to a person, someone who is Mu'min. So if we take care of our Iman, it means we have been protected from the hellfire, and also we have been protected from the enemies of Islam and enemies of mankind. The other thing Imam al-Islam said, Al-Iman najatun. Or the people, if you are seeking for najat, you are seeking freedom from all calamities, from enemies, from shayateen, your najat is when you are mu'min. Next is al-mar'u bi-imanihi. Al-mar'u bi-imanihi. In the war of Khaybar, for many days, Muslims were going to attack the Jews in Khaybar, and they were coming back. They were usually defeated. But then Hazrat Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam said that tomorrow I will give the flag of Islam to someone who is Rajul, mean someone who is Mard. यानी कल मैं अल्लाह इस्लाम उसको दूंगा जो मर्द होगा. और फिर न सिर्फ ये कि जो मर्द होगा, बल्कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है. तो यहां भी हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल मरउ बे-ईमानिही. A person is recognized, a man is recognized by his iman. How strong is someone is in iman. यानी आप लोगों को ना माल से पहचानो, ना उनकी शक्ल से पहचानो, ना उनके कबीले से पहचानो. किसी को अगर पहचानना है तो उसके ईमान से पहचानो. The identity of a person is dependent on the iman. Someone who is strong in his iman, it means he is a good person, he is a good man, he is a good believer. Salawat. So maybe many mu'mineen will be poor in this world. Hazrat Ali al-Islam said, Al-Faqr Zinatul Iman. If someone is mu'min and he is a poor person, it does not mean you should be scared of him or you have to have hate to him. No, that is beauty of the believer. If a believer has a lot of wealth, it's okay. But if there is a believer and he is not having a lot of wealth, it does not mean we have to hate to him. No, that is his beauty. We should love him more. Because a believer without poverty, if there is a believer, if there is a moment, we have to love him. But if there is a believer and that believer is poor, we should love him more because he has extra beauty of his iman. In next thing Imam al-Islam said, Al-Yaqeenu unwanul Iman. The sign of Iman is Yaqeen. As I told you already, and in the next sentence Imam al-Islam said, Wajal Yaqeen afsal al-Yaqeen. Oh Allah, give me that Yaqeen which is the best of the Yaqeen. And Yaqeen, it depends on our knowledge. Yaqeen depends on our Iman. For example, the level of Yaqeen of a person who is illiterate is different about, for example, just if we consider our body, so level of a Yaqeen of an illiterate person is different as compared to the level of Yaqeen of a doctor. So doctor's certainty and Yaqeen and knowledge and skills, all these are due to his knowledge. So as well as we are getting more knowledge, the level of our Yaqeen will increase. So Imam al-Islam said, Al-Yaqeenu unwanul Iman. Someone who has more Yaqeen, it means his Iman is also stronger. And in Surah Al-Taqasur, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned Al-Haakum al-Taqasur Hatta zurtumul makabir.
Kalla sawfa ta'lamun. When you will go in the graves, then you will know. Then you will see. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqeen. So when you will go in the graves and you will see accountability, angels, or maybe there will be pressure of grave, maybe there will be snakes and scorpions, or maybe some people will enjoy the blessings and bounties of paradise in the grave. So Allah says when you will go in your grave, you will see, you will know, and by knowledge you will develop a yaqeen. But that yaqeen is ilm al-yaqeen. That is when you are dying and then you are going into. But Allah says there are some people, la tarawunna al-jahim, who are able to see while they are alive. While they are here, they are not dead. They, due to their iman and yaqeen, they have developed the capability. They are able to see what is happening in the graves, what is happening into the hellfire, what is happening into the paradise. So when they can see, so it means they have knowledge, they have skills. So their level of yaqeen is different from the ordinary people. La tarawunna al-jahim, summa la tarawunna ayn al-yaqeen. So when they will see with the eyes of the heart, so their yaqeen is different from the ilm al-yaqeen, the people who believe, but that belief is just due to knowledge, theoretical knowledge. But those people who have seen by experiment, so their level of yaqeen is different from the ordinary people. So likewise, Imam al-Islam said, al-yaqeen unwanul iman. Yaqeen, and we must develop this yaqeen. The main problem is here. We all are Muslim, we believe Allah is watching, there is grave, there is accountability, there is day of judgment, there is hellfire, we all know. But where is the problem? Problem stays with our yaqeen, because we do not believe, although theoretically we believe, practically we do not believe Allah is watching us. Allah will punish us. There is hellfire. So how we can develop it? As well as our iman will be stronger, our yaqeen will also be stronger. Imam al-Islam said, al-imanu wazihul walaij. If you can lean at something, that is your iman. Al-imanu shafi'un munjihun. Al-imanu shafi'un. Your iman will be your intercessor at the day of judgment. If you will face any problem, any difficulty in accountability at the day of judgment on Pul-e-Sirat, तो जो भी मुश्किल होगी तो वहां पे यही आपका ईमान होगा जो आपकी मदद करेगा, आपको छुटकारा दिलाएगा. अल ईमान बरीओ मिनल हसद, अल ईमान बरीओ मिनल निफाक. जहां ईमान होता है वहां हसद नहीं होता, जहां ईमान होता है वहां मुनाफिकत नहीं होती. So if we have two pots, one pot has iman and another pot has hasad, jealousy and the hypocrisy. So anyone who is mu'min, his heart must be free of jealousy and hypocrisy. Why? According to Hazrat Ali alayhi salam was kull iman. So Imam alayhi salam says iman and jealousy and hypocrisy cannot stay at one place. If we have jealousy for any brothers or sister in iman, if we are having any bad feeling, any grudge against any sister and brother in iman, it means we are not mu'min, because jealousy and hypocrisy cannot stay with iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kun li waliyika al-hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्ल फरमा, हाज़रीन मोमिन मोमिनात की तमाम हाजात को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इबादत को, दुआओं को, नमाजों को, कुरान को, हमारे मजालिस को मंजूर व मकबूल फरमा और इस कलील इबादत को कसीर इबादत में तब्दील फरमा। हमारे मरहूमीन को बख्श दे और ख़ुसूसन मरहूमा सुल्तान आरा इफ्तिखार फातिमा, नज़ार निसा, अजीज़ निसा, साले खातून, इन मरहूमीन के लिए प्लीज सूरह फातिहा पढ़ दीजिए।